Let me just quickly tell you. We should not waste much time. Let me define a set that is called, suppose E plus S. That is defined as E plus X such that X belongs to S. Do you understand this set first? Where E is a real number already given, and I am defining E plus S as E plus X where X belongs to S. Do you understand this set? Suppose, let me give you some example. Suppose let me say S equal to 1, 2, 3, 4. And if I say E is equal to say minus 1. So can you tell me what is E plus S? What will be my E plus S? As per the given condition, can you tell me? 0, 1, 2, 3. Do you agree everyone? Is there any other people in the set? No, very good. Okay. Uh, One more thing. Suppose A is equal to 10 and S is equal to your set of real number, if I say. Then what will be your A plus S? Can you tell me? That is A plus S is same as 10 plus R. What will be that? What's your guess? Think about it. Try to draw and try to sing. Each of real number I am shifting to any other. Say 0, 1, 2, and there are no. This will be a real number. How many of you agree? Just do you agree? Yeah, good. Yes, nice. Be- Correct. That is real number ना, वही मतलब हुआ ना, minus infinity. You want to say minus infinity, but वही मतलब हुआ ना भाई. This is same as your real number. Correct? Perfect. Very nice. And 10 कोई स्पेशल बंदा है क्या? 10 की जगह पे कोई भी बंदे कोई भी ऐड किया तो भी करेक्ट. सो इन जनरल कैन आई से, अगर ए प्लस रियल नंबर बोला दैट विल बी योर रियल नंबर. डू यू एग्री? Yeah, nice. This was just simple exercise. Let me define one more set. Say E plus B. It is defined as C small e plus small b, where small e is in E and small b is in B. We'll start with a simple example. Suppose E मैंने बोला 1 2 3 and B बोला suppose 0 1 3. 0 1 3 or 0 1. Let me keep 0 1. So can you give the elements of A plus B? What will be A plus B as per the condition? Okay. It will be, how are you doing? I just want to know the logic. You are starting with one element and you are adding with everybody, correct? So the first number will be 1 and second number will be 2. Next, you are starting with second number and adding with the both, correct? So if you put 2 plus 0, so it will be 2. But in a set, you cannot repeat the element because you are already having 1, correct? So 2 I will not write, then it is 3. Then next will be 4. Do you agree? यही आएगा ना? Very nice. Okay. Yeah. So let me ask you one question. See, 2 minus 2 क्या होता है? 0. करेक्ट. 3 minus 3 0. और कोई भी नंबर ले लिया e minus e 0. करेक्ट. What about e minus e? Oh, I was knowing कोई ना कोई तो बोलेगा. Good. Think about it.
Think about it. This is A is a set, huh? It depends on a set definitely. सपोज यही मैंने सेट बोल रहा हूँ 1 2 3 एंड सी ए प्लस बी को मैंने ऐसा डिफाइन किया ना ए माइनस बी को भी ओके लेट अस सी ए माइनस बी को मैं डिफाइन करो दिस इज ए माइनस बी such that A belongs to A and B belongs to B. Now, can you tell me what is? Let us not see A minus A first. Let me see A minus B. Can you give me A minus B? This is your A. This is your B. What will be your A minus B? Again, you will start with the same thing, na? Take first number, subtract with both the guy. Correct? So it will be 1 minus 0, 1 minus 1. So it will, let us write the same format, whatever you are getting. 1 minus 0 is 1, then 1 minus 1 is 0. Is that correct? What will be the next one? 2 minus 0 is 2, then 2 minus 1 is 1. 1 I have already included in the set. Next, 3 minus 0 is 3, and next 3 minus 1 is 2. Is that okay? यही आएगा. Perfect. Now, do you see A minus A 0 नहीं रहेगा? Do you see the logic? Can somebody tell me what will be A minus A? If you are not comfortable, you write A again and now try to see. You'll see a magic. This is mathematics actually. Yeah. Tell me what is the answer. First, you will start with the first element. Oh, but I have. Hmm. Oh, can you tell me the element now? Do you see A and A likha? Can you tell me the A minus A? It will be start take one element and subtract with everybody. So let me just write. हाँ -2 to +2 अगर बोला ना तो यू नीड टू मेंशन कि ये सी -2 to +2 अगर रैंडमली बोला था इट में भी रियल नंबर भी आएगा ना तो हाँ इंटीजर बोलना चाहिए करेक्ट और बेटर है डायरेक्ट ही इसमें सो क्या आएगा देखो 1 minus 1 is 0 1 minus 2 is -1 oh just wait a second yeah so it is 0 1 minus 2 is -1 then 1 minus 3 is -2 what next 2 minus 1 is 1 next 2 minus 2 is 0 I have already included 2 minus 3 is -1 -1 is also there correct 3 minus 1 is 2 and 3 minus 2 is 1 and 3 minus 3 is yeah perfect do you see correct so now you have got something beautiful you may ask with your some of your juniors if you have anybody ask them that is what is A minus A you will see they will say 0 and again one more question what will be A plus A whether it is 2A or it may be something else huh, again your answer should be sir it depends on your set A correct yes so try not in rushing in answering something try to give a precise answer हाँ भाई पहले सेट तो दो मुझे if you are saying addition of two thing or if just now a minus a मैंने दिया तो you should ask कि sir a क्या है whether it is number then it is zero whether it is set then it will depend suppose अगर मैंने a और a को integers बोला that is z minus z then what will be your answer अरे अभी तो सेट दे दिया अरे भाई z z क्या है z मतलब इंटीजर अभी मैंने दो सेट दिया तुमको इंटीजर इंटीजर आई एम टेलिंग सब्ट्रैक्ट देम क्या आएगा मेरा ही मतलब लॉजिक मेरे पे ही अप्लाई कर रहे थे यस व्हाट विल बी एनीबॉडी विल इट बी जीरो z minus z z is set of integer I want to find z minus z I have already defined a minus b define कैसे होता है very nice it will be z anybody else do you agree with him you know why it is z because in z if I take 0 here correct
0 minus z, then you will get everybody actually. You see, z have positive numbers, also negative numbers. So negative number will multiply with minus, then it will become positive, and positive will be negative. Correct? Do you agree? बाकी 1 and 2 कुछ भी रखा ना, तो that's just number repeat होंगे, that's it. This was nice. Now let us come back to our topic. ये मतलब बताने का मोटो क्या था? Just to make you familiar with the this type of set. So let me just ask you, LUB of E plus S. What do you think? Will it be E plus LUB of S or less than greater than क्या रहेगा? And same the next question will be GLB of E plus S. You already know what is E plus S and E plus GLB of S. What do you think? हाँ, एंड बिफोर दैट एस तुम्हारा नॉन एम्प्टी है, बाउंडेड सेट है. बाउंडेड रहेगा तभी मैं एल और जी की बात कर सकता हूँ. आई होप मतलब बार बार बताना ना पड़े वो. व्हाट डू यू थिंक? लेस देन इक्वल टू क्या आना चाहिए? यू मे थिंक बाय टेकिंग सम एग्जांपल. सपोज एक फाइनाइट सेट लो, 1 2 3 4 5. ठीक है? सो व्हाट इज द लीस्ट अपर बाउंड फॉर दिस सेट? The set is having 1 2 3 4 5. So first tell me the upper bounds. What are the upper bounds? It will be greater than equal to 5, na? Correct. So 5, suppose now I am adding, suppose 5, I am adding 5 to the set, that is I am asking 5 plus s. So your set will be 6 plus 7 plus 8 plus up to 10. Do you agree? 1 2 3 4 5 दिया था मैंने. Now I am adding 5, that is 5. I am asking 5 plus s. That will be a set consisting of 6 plus 7 plus 8 plus, so sorry, 6 7 8 9 10. So what is LUB here? अपर बाउंड क्या है? 10 से ऊपर वाले ना. सो लीस्ट अपर बाउंड की बात किया तो 10 विल बी माई लीस्ट अपर बाउंड. इन माई सेट एस 5 was my least upper bound. In my this set, that is 10 is my least upper bound, but I am adding 5. So do you see यहाँ पे इक्वालिटी मतलब ऐसा दिख रहा है अपने को. एंड सेम हियर भी अगर सब्ट्रैक्ट किया तो दिस इज जस्ट रैंडम गेस. हाँ, अभी तक प्रूफ नहीं किया है. वी आर जस्ट गेसिंग कि शायद ये होएगा. Do you see, by just taking an example, simple सा कोई भी example लिया, we just try to see. And one more thing, ये example मतलब may not work because this was, I was taking a finite set. ये finite के लिए ही check किया, but I am talking S कोई भी non empty set हो, subset of real number. Maybe I should have written it earlier. I will write it here. No, don't have any place. So what is your S non empty? Oh, non empty. Oh, bounded. Oh, I hope you understand that. Okay, so let us try to prove. You want to prove LUB of E plus S, that is equal to E plus LUB of S. So let us start. Shall we start? Let X is equal to LUB of S. चलेगा? And Y equal to नहीं, X को ही रखने देते हैं. Let X equal to LUB of S. ठीक है? So what you have to prove? To prove LUB of E plus S, that should be E plus X. Do you agree? Yes. This is what you have to prove ना. Just मैंने LUB of S की जगह पे X रख दिया. That's it. Now you already know what is the definition of LUB. Can you tell me?
You must write the definition here. Make a habit of writing a definition all the time. What do you mean by LUB? And what is the first condition of LUB? If I want to prove that A plus X is LUB of this set, that is A plus S, then what first I should check? What is the definition? No, not X, that this element. I'm proving this element is LUB of this set. Do you agree? So this element should be an upper bound of this, correct? Yeah. So first part is to prove E plus X is upper bound of set E plus S. Perfect. So shall we start now? To prove upper bound क्या करने का अभी? Do you know something about X? X क्या है? What is your X? हाँ. So can I use that? Since X is least upper bound of S, that means what? Take any element S of S. What will you get? What will you get? स्मॉल एस लिया मैंने. टेक एनी एलिमेंट एस ऑफ एस. एक्स क्या बोल रहा हूँ मैं? लीस्ट अपर बाउंड. सो व्हाट विल बी द थिंग? लीस्ट अपर मतलब अपर बाउंड तो है ना. करेक्ट. दैट इज एस इज लेस देन इक्वल टू एक्स. कैन आई राइट लाइक दिस? बिकॉज एक्स इज लीस्ट अपर बाउंड ना. इज दैट ओके? डू यू एग्री एवरीवन with this statement? S is less than equal to x. Yeah, perfect. Now you are done actually. You just add both the side e. Can I do that? That is, can I say e plus s that is also less than equal to e plus x? वी हैव लर्न कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं. करेक्ट. रियल नंबर सिस्टम पूरा क्या पढ़ा हम लोग ने? यही सब एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा सब कर सकते हैं. डू यू सी दैट इज e plus s. This is small s and this is true for all s. So can I say this imply e plus x is upper bound of e plus s? Can I see this by this thing? Because how does the element of e plus s look like? e plus s सेट कैसे डिफाइन किया हम लोग ने? याद है? You see the first line. E plus s is defined as e plus, actually small s बोलना चाहिए था. s में है तो s में ही बेटर रहेगा. So e plus is defined as e plus small s, where small s belong to s. Hello. Sorry, actually maybe some network issue. Yeah. So do you agree with this? Are we done with the first proof? Yeah, I am just saying, since x is LUB of s, that means x is an upper bound also. Upper bound means what? If you take any element s in s, your s will be less than equal to x, correct? Because x is an upper bound. For all s in s, your s will be less than equal to x. And next part, I'm adding both the side e. So that is e plus s, that is less than equal to e plus x. But from here, from this thing, I can conclude this e plus x is an upper bound of e plus s, this set e plus s. Why? Because if you see the element of e plus s, they look like e plus s, where s belong to s. Element of this set look like this, and every element is less than equal to e plus x. So e plus x is an upper bound. That's simple. Correct? Is the first part okay? Think, just look at the proof. You will get that. Try to see what how the element of e plus s look like. Or maybe I should define it here. That is, e plus s look like e plus small s, where small s belongs to s.
और हम लोग ने क्या बोला है, ए प्लस, जितने भी ए प्लस एस दिखने वाले लोग हैं, एवरीबडी इज लेस देन इक्वल टू ए प्लस एक्स, मतलब ए प्लस एक्स इज एन अपर बाउंड, दैट्स इट. Okay, what next? What is the second condition? What is the second condition? If let me say v, let v be any other upper bound, any other बोलो और v be upper bound of e plus s, correct? Then what you have to prove? Very nice, very nice, correct. So let us see, v be an upper bound of a plus s. What do you mean by that? What do you mean by that? V is an upper bound of a plus s. अपर बाउंड का मतलब क्या होता है? टेक एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, करेक्ट. दैट मीन्स इसमें एलिमेंट कैसे दिखते हैं? दैट मीन्स आई कैन से e प्लस स्मॉल s इज लेस देन इक्वल टू v फॉर ऑल s इन s. कैन आई सी दैट? सिंस मैंने v को अपर बाउंड बोला, तो e प्लस s इज लेस देन इक्वल टू v फॉर ऑल s इन s. कैन आई सी दैट? Perfect. Okay. Uh, let us see one more thing. Hmm. Sorry, e plus. Yeah, we wanted to prove e plus x से छोटा ना, ठीक है. हाँ. What will be a minus b? Or wait, just give me 1 second. I'll make it quite easy. Just by defining that. Let us not go in this way. Do you remember the contrapositive statement of your second part? What was that? There was two definitions I gave you. The second one, that's why I gave you, because it will be easy in proving. What was that? If I'll just write maybe here. Second condition I'm writing. Okay. If beta is, sorry, if beta is less than equal to alpha, then beta is not an upper bound. Correct? यही था ना? It should be less than only, no? Not upper bound. Correct? Do you remember? यही था second condition. So that is what I want to use here. So now I want to say, suppose v is less than to whom? E plus s. Do you agree? सॉरी, ई प्लस एक्स ना, एक्स को मैंने एल यू भी बोला है अपने केस में. समझ रहे हैं तुम लोग को? प्रूफ क्या करना है मेरे को? ई प्लस एक्स को एल यू भी प्रूफ करना है ना. सो आई वॉन्ट टू से एक और बंदा कोई वी है दैट इज लेस देन ई प्लस एक्स. नाउ व्हाट विल बी माई क्लेम? व्हाट आई हैव टू प्रूव? This is my least upper bound, and there is somebody who is less than that least upper bound. So what is my claim? That means v is not an upper bound, na? See, that means to prove v is not an upper bound. That's it. This is what you have to prove. Correct? So we are given with this. Let us start. V is less than a plus x, and can I write like this? That is v minus a is less than x. Yes. हाँ.
And what do you know about x? What is your x? What do you know about x? Very nice. LUB of E. So your x is LUB of E, LUB of S, na? And there is someone who is less than LUB. Yeah, LUB of S. And there is someone who is less than LUB. Then what can you say? That is V minus A is not upper bound of S. Do you agree? By the definition of LUB of S, try to say it properly. I started with V is less than E plus X. I want to prove V is not an upper bound. I wrote that is जो भी मुझे पता था, that is V is less than E plus X. Then क्या किया मैंने? I put E this side, that is V minus A is less than X. But I know something about X. X is LUB of set S, and there is someone who is less than that. That means V minus A is not an upper bound of S. What do you mean by that? Not an upper bound का मतलब क्या होता है? That means there exists some h dash बोलता हूँ मैं. There exists some h dash belong to S such that V minus A उससे भी छोटा है h dash से. Do you agree? Okay, very nice. What next can I write like this? V is less than E plus h dash. Minus A उधर भेजा. Yes? Do you agree? And E plus h dash. Does E plus h dash belongs to your set E plus S? बिकॉज ई प्लस एस के एलिमेंट कैसे देखते थे? ई प्लस सम एस का एलिमेंट कोई भी, सो एच डैश भी तो एस का ही एलिमेंट है. सो ई प्लस एच डैश बिलोंग टू ए प्लस एच. मतलब ये सेट में एक बंदा ऐसा है जो वी से भी बड़ा है. सो कैन आई से implies V is not an upper bound. Do you see the proof? Do you see how smartly we use that LUV of x का definition? See part 1 में हम लोगों ने upper bound का यूज़ किया, part 2 में हम लोगों ने second condition का यूज़ किया. एंड यही टेक्निक जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग प्रूफ, सब में यही टेक्निक लगेगा. दैट्स वाई ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाला क्वाइट ईजी होता है. लेट अस गो थ्रू द प्रूफ वंस अगेन. वी स्टार्टेड विथ सपोज v इज लेस देन e प्लस एक्स. ई प्लस एक्स को मुझे एल बी प्रूफ करना था, तो मैंने अज्यूम क्या किया, कोई भी बंदा उससे कम है. तो मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे प्रूफ क्या करना है, दैट इज v इज नॉट एन अपर बाउंड. दैट इज व्हाट आई हैव टू प्रूव. सो टू प्रूव v इज नॉट एन अपर बाउंड मुझे क्या करना पड़ेगा? लेट अस स्टार्ट. जो भी अपने को दिया है, वी आर गिवन विथ v इज लेस देन e प्लस एक्स. सो मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप a को इस साइड लिया, दैट इज v माइनस ए इज लेस देन x. बट वी नो समथिंग अबाउट x. x क्या है? LUB ऑफ s. अभी LUB ऑफ s है एंड देयर इज समबडी विच इज लेस देन LUB. सो व्हाट कैन यू से? v माइनस a इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ s. डू यू अग्री विद दिस थिंग? मेन यही है. हाँ, डू यू अग्री विद दिस? v माइनस ए इज लेस देन x. x इज LUB. LUB से छोटा कोई है, दैट मीन्स ये तो अपर बाउंड है ही नहीं. सो v माइनस इज नॉट एन अपर बाउंड. नॉट एन अपर बाउंड मीन्स व्हाट? कोई तो एक ऐसा बंदा है सेट में जो v माइनस ए से भी बड़ा है. सो आई रोट दैट इज देयर एग्जिस्ट s डैश बिलोंग्स टू s सच दैट v माइनस ए इज लेस देन s डैश. That means v is less than a plus s dash, but we know a plus s dash that belongs to your set a plus s. Why? Because a plus s के एलिमेंट कैसे दिखते हैं? a plus s का एलिमेंट के टाइप. So in the set a plus s we are having one people, that is one guy who is a plus s dash, that is bigger than v. So that's why v is not an upper bound. Do you agree? दैट मीन्स व्हाट? ए प्लस एक्स. अभी हम लोग ने दोनों कंडीशन प्रूफ कर लिया. फर्स्ट कंडीशन अपर बाउंड प्रूव किया, सेकंड कंडीशन ये यूज़ किया हम लोग ने. ये प्रूफ का पार्ट नहीं है, दिस इज डेफिनेशन का पार्ट. दैट इज इफ आई एम अज्यूमिंग समबडी एल्स,
देन आई नीड टू प्रूव दैट गाय इज नॉट एन अपर बाउंड, और वही हम लोगों ने प्रूव किया। वी अगर लेस देन ए प्लस एक्स लिया, आई प्रूव दैट वी इज नॉट एन अपर बाउंड। डू यू अग्री? गुड। या सी व्हेन यू गो थ्रू विद द प्रूफ वंस अगेन, यू विल सी मतलब ये you will find a happiness while proving this. You try to, I just give you an exercise, try to prove GLB वाला part, सेम ऐसे ही करना है। try to prove GLB. Are we having some time? 11:34 na, we are having some time, so I'll quickly do one more exercise. The second one is homework huh? You will see जो भी टेक्निक मैंने यूज़ किया ना, वही टेक्निक विल यूज़ एवरीवेयर, improving everything. So let me do one more example. Say yeah, e plus b के लिए देखते हैं, that is LUB of e plus b. My claim is that this will be LUB of a plus LUB of b. Let us see. ठीक है, स्टार्ट करें। GLB वाला तुमको करना है। यू ट्राई टू ऑब्जर्व द पैटर्न। ए प्लस बी के लिमिट कैसे देखते हैं, अभी क्विकली देखते हैं हम लोग। बोलो। This will be e plus b, where a belongs to a and b belongs to b. Perfect. Now let me consider, let alpha is LUB of a चलेगा, and बीटा को मैं या x and y बोलो, जो भी तुम लोग बोलो, LUB of b बोलता हूँ, ठीक है। To prove alpha plus beta is LUB of a plus b, तो मुझे दो दो पार्ट प्रूव करना रहेगा। व्हाट इज फर्स्ट पार्ट? व्हाट इज फर्स्ट पार्ट एज पर द डेफिनेशन? अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी एन, अरे बोलो भाई। To prove alpha plus beta is an LUB of A plus B, what is first part? First part is to prove alpha plus beta, that is, I should write, that is, first part to prove alpha plus beta is upper bound of set A plus B. Do you agree? Can you prove that? You are given something. Alpha is LUB of A, beta is LUB of B. So can I say, since alpha is LUB of E, और just upper bound बोला तभी भी काम हो जाएगा इधर, LUB of E, that means what? For all A in A, A is less than equal to alpha. Do you agree? Beta is LUB of B for all B in B, small b is less than equal to beta. Do you agree? If I add both of them, that is a plus b, that is less than equal to alpha plus beta, and you already know a plus b किसके एलिमेंट दिख रहे हैं? For all a in A, perfect, A in A, B in B, then how, what can you claim? Alpha plus beta is upper bound of A plus B. Do you agree? Do you agree with the first part? Do you see same logic यूज किया हम लोगों ने, कुछ भी मतलब LUB का मतलब जस्ट अपर बाउंड यूज किया। अल्फा अपर बाउंड है, बीटा अपर बाउंड है, तो जस्ट दोनों को ऐड कर दिया। आई गॉट दैट ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा इज नाउ अपर बाउंड ऑफ ए प्लस बी। व्हाट इज नेक्स्ट पार्ट? या दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। या व्हाट शुड आई स्टार्ट विथ? सेकेंड वाला डेफिनेशन यूज करेंगे, वो ज़्यादा इजी लगता है मुझे। यू विल सी मेनी बुक्स दे आर प्रेफरिंग फर्स्ट वाला डेफिनेशन, बट आई डोंट लाइक दैट। ये सेकेंड वाले में अच्छा सा मतलब लॉजिक यूज होता है, तो दैट्स वाई। व्हाट शुड आई स्टार्ट विथ? लेट v इज लेस देन अल्फा प्लस बीटा। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव v इज नॉट, अरे बोलो, ऑफ ए प्लस बी। सेट इंपॉर्टेंट है, हाँ, करेक्ट।
सो शैल वी स्टार्ट, जो भी गिवन है उधर ही से स्टार्ट करते हैं. So we are given v is less than alpha plus beta. You will see some beauty here. Be with me. So can I say hmm, v minus beta that is less than alpha? Yes. Okay. Can you guess what is my next argument? What am I going to say next? Very nice. Very nice. Since alpha is LUB of A, then what? Then what? बोलो बोलो. बीटा में यूज कहाँ कर रहा हूँ उसको. सी हियर आई एम यूजिंग अल्फा LUB ऑफ ए का एट अ टाइम यूज कर रहा हूँ, फिर अभी उसको भी यूज करूंगा, डोंट वरी, उसको भी यूज करूंगा. बट अभी ये टाइम पे बीटा इज जस्ट वर्किंग एज अ नंबर हियर. ही इज नॉट एट ऑल स्पेशल टू मी. करेक्ट. सो डू यू सी अल्फा इज LUB of a, what should I say next? There is someone who is less than that alpha. So that means there exists some A dash belongs to A such that, yes, V minus beta is less than A dash. Do you agree? Just go back and check. Since alpha was my LUB, LUB से भी छोटा कोई बंदा है, मतलब क्या, सेट A में कोई एक तो ऐसा है जो ये नंबर से बड़ा है, that is V minus beta is less than A dash. Do you agree? Good. What should I do next? ये बीटा को उस साइड भेजो. V is less than beta plus A dash. Now can I say V minus A dash is less than beta? Do you see now? अभी मैं क्या बोलने वाला हूँ? Very nice. Now since beta is LUB of B, what is the argument? There is someone who is less than LUB. मतलब क्या? There exists some B dash belongs to B such that V minus E dash is less than B dash. Do you agree? What do you mean by that? That is V is less than E dash plus B dash. And E dash and B dash किस में है? They belong to the set A plus B. Do you agree? What is the next? What is the conclusion? Means there exists an element in set A plus B who is bigger than V. That means V is not upper bound. Do you agree? Very nice. You see the beauty of proof. सेम वही लॉजिक यूज किया कि नहीं हम लोगों ने जो पहले में किया था. एक LUB को एट अ टाइम यूज करो. जस्ट गो बैक टू द प्रूफ एंड सी. हर एक स्टेप देखो. फर्स्ट स्टार्ट कैसे किया. We started with let V is less than alpha plus beta. We wanted to prove V is not an upper bound of A plus B. So we started, जो भी given है वो start करता हूँ मैं. I wanted to use alpha LUB है तो थोड़ा तो special बंदा है. So let us give preference to him first. So मैंने beta को इधर रखा, that is V minus beta that is less than alpha. Since alpha is LUB or there is someone who is less than alpha, that means what? There will be someone, there exists some element in the set A which is greater than V minus beta. Do you agree? Just go through the proof once again. Hence क्या बोलेंगे फाइनल हम लोग ने, by 1 and 2 alpha plus beta is an LUB of the set A plus B. हर एक का GLB वाला पार्ट मैं तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूँ. You need to prove it. सेकेंड पार्ट, बिकॉज अगर तुमने ये सेकेंड वाला प्रूफ कर लिया दैट मीन्स तुम लोग को प्रूफ समझा है. क्या प्रूफ करना है? GLB ऑफ E प्लस बी दैट इज सेम एज GLB ऑफ E प्लस GLB ऑफ B. अगर नहीं हुआ तो आई एम देयर, आई विल हेल्प यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, डोंट वरी. जस्ट गो बैक टू द प्रूफ. हाँ.